Hi, Babu. Can you hear me? Yes, sir. Yeah. So I have discussed it with Nuzhat. So since Nuzhat is in Laya Hub in Pakistan, so there are Okay. almost 10, 12 people who are selected, and they'll be joining this session. Okay. So Okay. yeah, via Nuzhat. So we are thinking to actually start it uh, Okay. We'll start. now, and yeah, and we'll do it in Urdu language because we only have Urdu audiences. So we'll also skip some part Hmm. of it. No, I Uh, think we have one, two, four, five people, five audience. okay, I can't see any. Yeah, we have around we have eight, seven people. Okay, so then we can start. Huh? Yes. Yes. Okay. Hello, everyone. I hope you are able to hear me. I'm really sorry for starting it late because I just heard from Babu that there are few people joining in this session. As you know, my name is Seher Afshin, and Nuzat, can you kindly mute yourself? Yes. Thank you, Nazar. So my name is Seher Afshin, and I work with Oxfam in Pakistan, and I lead this program EYW in Pakistan as well. So as you all know, that in today's session we are going to talk about the youth-led rural hubs, and these hubs, were. The part of our these actually rural hubs remain the nucleus of the project throughout the last 5 years. So we selected two rural districts of Pakistan, one in Laya, that is in Punjab, and the other is Jamshoro, that is in Sindh. And these are, the poverty stricken districts. They are, they are disaster prone districts as well, and they actually falls under the poverty line. So there was a specific reason to select those areas, because there is the areas are actually are struck by any climate disaster every year, and the resilience of the people, young people particularly, need to be enhanced in those particular areas so that they can stay connected with their livelihoods and can earn for their households. So we actually and the hub is actually, as I mentioned, that like these were the purpose was to convert those hub and into the youth led hubs, so that they can actually being led by the youth, and youth can actually take them into the direction where they want to take it to. It The hub actually served as a source to kick off numerous innovative initiatives in those in under this particular project. Sir, sorry to interrupt. Your audio is breaking up. We're not able to hear you.
Hello. Can you guys hear me now? Yes, madam. We can hear you. That's great. Great. So, Babu, I was saying that I want to start this session with a quick poll that we have created. So, can you kindly help me to run that poll? Yes. So as I mentioned that, like, I have just developed a quick poll just to kind of, converge ourselves to the discussion that we are going to have in the remaining, 1 hour or so. So the first question that I would like to ask you is, what comes to your mind after hearing the word youth-led rural hubs? So it's is it a place to chill, or something for serious business inventions? And then there are a few other options as well, like a space to experiment new ideas with fun and passion and co-create solution to local problems, or a space to raise livestock. So I'll request you all to just click whatever comes to your mind, whatever is right. There's no right and wrong here. It's just a fun way to engage ourselves, to some of the discussions, and maybe some of the reality kind of experiences that we had to face on ground when we used to kind of sell hub. Uh, so yeah. So can you give your answers? Okay. So I think, I've not been able to see the results now, but Babu, can we move to the next question? Okay. So the next question is appearing in the poll section. So I'm not sure whether you have been able to, see the poll section or not. Can you? Okay. Why facilities like youth-led hubs are required in rural areas? So the options are to boost rural economy, uh, more income for local communities, provide economic opportunities to rural youth, especially young girls, a Western concept to solve local problems, or to earn money using modern ideas. And there can be more than one right question as well, right answer as well. Yes. Okay. So the next question is next. Vajit, can you kindly mute yourself? Okay, thank you. The next question is how rural hub can become sustainable. So the options are should earn as much as it can. So it should, charge high prices and should earn as much as it likes, or by becoming a social enterprise with diverse business models implemented for creating social impact. An option can be that rural hubs can't sustain because they can't earn enough money that that they can sustain. So you can also opt for that if you feel that like that can be the option, and then should be handed over to the government. Hmm. Samatur has opted for option two. Wow, that's great. So who else agrees with Sama?
Okay, so let's move, to our last question, and I'll then, move to the right questions. I'll tell you, what were the right answers, and maybe, there can be multiple right answers in your view, but this was just to, trigger our thinking. So, what role youth-led hubs can play to boost the economic ecosystem of rural areas? So I think, hub is not a very regular idea, particularly in the rural settings. So how it can actually, what role it can play to boost the economic ecosystem. So to it can promote the agri businesses, it can provide office spaces or co-working spaces, it can provide space for rally or movement building, or it can promote decent income opportunities for young women and men in rural areas. Okay. Okay. Saima has opted for option four. So great. That's wonderful, guys. So thank you so much for participating in the poll. The purpose of this, as I already mentioned, was to actually help you, get through quickly, into the conversation that we are going to have on the rural hub. So when we created that rural hub, a lot of things, also we really heard a lot of things that this rural hub is only created, for leisure activities and for only fun activities, and it will, cause harm to the youth. But the original idea of creating that hub was to actually provide young people with a safe space where they can experiment new ideas with fun as well, but also with passion, so that they can follow their dreams. They can, they can also kind of create some solutions to the local problems, but at the same time they also have to, they also can involve into the income generation activities. So this was, the right answer for the first question. For the second one, that asked, why facilities like rural hubs are required in rural areas. Of course, we all know that we want to create and provide economic opportunities for rural youth, particularly young girls, and that's why it's very much required that there are, spaces that can not only provide skills to those young people, but also connect them with, with the right places where they can go to and can provide them end-to-end solutions. Then how rural hub can become sustainable, as Saimatur very rightly mentioned, that like by becoming a social enterprise with diverse business models that are being implemented for creating social impact. It can be also, handed over to government. Of course, that's also right, but we all know that, like, and in our experience, that government is also not ready to take up any of the, any of the system that is not self-sustainable. So something that becomes burden on the government again, so they are not interested to take that up. So I think it's, first of all, it's really, really important for this model to become self-sustainable, and also to, work on the model of social enterprise, so that it can create social impact as well. And last but not the least, as I'm also very rightly pointed out, that, promote decent income opportunities for young women and men is actually, the main cause and mandate of this rural hub, and it can, actually boost the local economic ecosystem of those target rural areas as well. So thank you so much, for participating in the poll. I would like to, now move to the next section of this session, and here I would like to, introduce you to some of my very vibrant young people, who are, who were part of the EYW project right from the beginning. Some joined later, but have remained, they remained with us throughout our journey, and they really, really capitalize on, some of the skills, and so on their streams that they really want to, live through. So I would like to, now play a video, through which, we listen to the stories of some of the inspiring young people, and all those inspiring young people are also with us. So you, if after, the video, you'll get the chance to also, kind of ask question from those young people, and they'll answer your question as well.
So first of all, I would like to take you to the video, and it's a 12 minutes video, so you'll have to see it with patience. There are subtitles coming at the end. The video is recorded in the local language, so I'll request Babu if you can play the video. Sarah, we've not got the video yet. Could you play it in case you have it? Okay. Can everyone hear the sound, and can everyone see my screen? Yes, we can. Okay. मेरा नाम जवेद इकबाल है, मैं चक्रवत से 52 का रहायशी हूँ, जिला लिया और पंजाब से मेरा ताल्लुक है। नाम ज़किया बीबी है और मैं लिया के 126 चक से तलक रखती हूँ। मेरा नाम वाजिद अली है, मैं जामशोरो के रूरल एरिया मुंजराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या नज़र है और मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जिला लिया से मेरा ताल्लुक है। I think we're not able to look at the video. We can hear the audio. मेरा ऐसा कोई खास प्लान नहीं। Sorry? We can hear the audio, not the video. Okay. Babu, it's uploaded on the box link that we were provided for Pakistan. So if you can try to run it, because I'm not sure what's the issue, because I'm sharing my screen. Let me do it again, maybe. We can look at the audio now. We can see the video. You can see the video? Yes. मेरा नाम जवेद इकबाल है, मैं चक्रवत से 52 का रहायशी हूँ, जिला लिया और पंजाब से मेरा ताल्लुक है। नाम ज़किया बीबी है और मैं लिया के 126 चक से तलक रखती हूँ। मेरा नाम वाजिद अली है, मैं जामशोरो के रूरल एरिया मुंजराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। क्या नज़र है और मैं पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर जिला लिया से मेरा ताल्लुक है। आपको ज्वाइन करने से पहले मेरा ऐसा कोई खास प्लान नहीं था। मैं बस घर के काम काज करती थी और सिलाई वगैरह थोड़ी बहुत जानती थी। तो हमारे यहाँ यही समझा जाता है लड़कियों ने बस सिलाई करनी है, खेतों के काम करने और घर के काम करने और घर में ही रहना है। तो मेरा कोई खास प्लान नहीं था। तो देखा जाए कि मेरा कोई खास मकसद नहीं था, कोई प्लानिंग भी नहीं थी कि मुझे करना क्या है। मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि जैसे कि मेरे वालिद साहब हैं, वो एज अ फार्मर काम करते हैं, तो मैं भी उनकी तरह फार्मर बनूंगा, या जैसे कि और लोग हैं हमारे कम्युनिटी में जिस तरह के वो काम करते हैं वही काम करूंगा। मतलब कोई दिल से फीलिंग नहीं आती थी कि भाई जो मैं काम कर रहा हूँ क्या वो बिल्कुल सही भी है या नहीं। तो इस तरह का मतलब अगर कहा जाए तो मेरा कोई बेसिकली नहीं था कोई टारगेट वगैरह। मेरा बचपन से ही डॉक्टर बनने का ख्वाब था और मैं अभी पढ़ रही थी। मैट्रिक में थी कि मैं बीमार हुई और पैरालाइज्ड हो गई। इस दौरान ना मैं चाल फिर सकती थी, खुद से गिलास पानी का भी नहीं ले सकती थी और मुझे लगने लगा कि मैं घर वालों पे और मैं अपने आप पे एक बोझ हूँ। घर वालों पे और अपने आप पे मैं एक बोझ हूँ। मैं सांसें रोने का शिकार हुई। इस मायूसी के दौरान मुझे लाइफ में लगने लगा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। रब ने मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मेरी काफ़ी सपोर्ट की। सबसे पहले मैं एज ए इनोवेटर सेलेक्ट हुई, मैंने ग्रुप बनाया और हब से मैंने स्टैंडर्ड पैकेज, एम्प्लॉयमेंट, फार्मिंग और बिजनेस की ट्रेनिंग ली और जो कि मैंने अपने ग्रुप में रेप्लिकेट किया। उसके बाद फिर हब से मैंने टनल फार्मिंग और जदीद फार्मिंग
چھوٹے لیول پہ کچن گارڈنگ پوسٹ وغیرہ اور چھوٹی سطح پہ سبزیاں کیسے اگائی جاتی ہیں، سبزیوں کے محفوظ کرنے کے طریقے، مربے اور اچار وغیرہ بنانے کے طریقے پہ ہمیں ٹریننگ دی گئی، تو وہ میں نے لی، اور اس کے بعد پھر میں نے اچار بنانا شروع کر دیا، جو کہ جیسے میں نے اچار بنایا تو میرے گھر والوں کو ساتھ والی دکانوں پہ رکھا تو ان کو اور کافی سارے لوگوں کو پسند آیا، اور 2-3 اسٹال وغیرہ لگائے، کافی سارے اسٹال لگائے تو اسٹال پہ رکھا، اور میری اسی طرح سے نیٹ ورکنگ اور مارکیٹ ہو گئی اچار کی، اور پھر ساتھ ہی میں نے ہب میں انو کیفے اسٹارٹ کر لیا، جو کہ آج میں کیفے چلا رہی ہوں۔ ہب کے علاوہ اور بھی اداروں کو بھی کھانا اور ریفریشمنٹ میں پرووائڈ کرتی ہوں۔ کچن گارڈنگ کی ٹریننگ کروائی اور ٹنل فارمنگ کی ٹریننگ کروائی، جیسے کہ تھوڑی سطح پہ کیسے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، جس کی زمینیں وغیرہ نہ ہوں تو وہ اپنی فصلیں یا کچن گارڈنگ کے لیے اپنا سامان کیسے پورا کر سکتے ہیں، تو میں نے آپ کو دینا لگایا اور ٹنل فارمنگ بھی کرتی ہوں۔ میں یہ رورل ہب ملا، ہم نے یہاں پہ جو جگہ ہمیں ملی ہب، اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا، ہم نے اپنے بچوں کو ادھر جو ہے نا وہ پڑھانا اسٹارٹ کیا تھوڑے تھوڑے کر کے، جیسے کہ کووڈ میں جو SOPs تھی اس پہ بھی عمل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ EYW پروجیکٹ کے تحت مجھے کچھ میری سسٹر کو وہ بزنس کا سپورٹ کیا گیا، میں نے بھی اس کو بہت سارا بزنس میں سپورٹ کیا اور اس کو بھی رن کروا دیا میں نے۔ اور اس کے علاوہ اس پروجیکٹ میں جو مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ یہ بھی ہوا کہ مجھے ایک ڈائریکشن مل گئی۔ اس پروجیکٹ نے ہمیں بتا دیا کہ زندگی ابھی ادھر ختم نہیں ہوتی، اس کے بھی بہت سارے مقصد ہیں اور بہت سارے وے ہیں جو کہ آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے مجھے سپورٹ کیا، یہ دکان بنا کے دی، اس سے یہ ہوا کہ نہ میں بھی اپنے اخراجات پورے کر رہی ہوں بلکہ میں اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہوں۔ آپ نے مجھے اتنا سپورٹ کیا کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں نے پہلے رونا ہوتا تھا، بعد میں بات کرنی ہوتی تھی، نہ ہی مجھ میں کوئی امید تھی ان کے جینے کی، نہ ہی کوئی کانفیڈینس، کچھ نہیں تھا۔ یہ جو سب کچھ ملا ہے آپ کی وجہ سے ہی ملا ہے، کہ خود اعتمادی آئی ہے مجھ میں، اور نہ جو میرے دوست اور رشتے دار مطلب تھے، حالانکہ گھر کے لوگ بھی تھے، میری بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، نہ ہی میری بات سنی جاتی تھی۔ تو اب اس سے یہ ہونے لگا ہے کہ جب سے میں اپنے گاؤں پہ کھڑی ہوئی ہوں، نہ صرف میرے رشتے دار، دوست، میرے گھر والے میری بات کو اہمیت دیتے بلکہ مجھے اپنے نہ فیصلوں میں بھی شامل کرنے لگے اور مجھ سے نہ مشورہ کرنے لگے ہیں۔ امید نوکریاں کاروبار سینٹر ہمارا جو ہے ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے رجسٹر کیا ہوا ہے، اور اب ہم لوگ جو ہے یوتھ جو ہماری ہے خصوصاً فیمیل اور میل کو ہم لوگ رجسٹر کر رہے ہیں، اور رجسٹر کرنے کے بعد ہم لوگ مختلف کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، یہاں پہ ان لوگوں کی جو ہے جاب پلیسمنٹ کرائی جاتی ہے، ان کو آپس میں لنک اپ کرایا جاتا ہے۔ لنک اپ کرانے کے بعد جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ لنک رہتے ہیں، جو امپلائی کے ساتھ بھی اور ڈیمانڈ سپلائی والی سائڈ سے بھی، تاکہ ان کا آپس میں ایک کنیکشن رہے اور ان کی جاب جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ وہاں پہ ہو جائے، تاکہ ان کا بھی روزگار بہتر ہو اور NY کے کبھی ایز اے سوشل انٹرپرائز وہ بھی چلتا رہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے جیسی جو لڑکیاں ہیں سر سے محرومی کا شکار ہیں اور نہ معاشرے میں انہیں تاس نگاہ سے ہم جیسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم نہ ان کو ان کے ہم جیسے لوگوں کو ہنر دیا جائے، یا کوئی چھوٹے پیمانے پر کوئی کاروبار کر کے دیا جائے۔ ان کی مدد کے لیے میں حق کے ساتھ رہ کر ان کے کام کرنا چاہتی ہوں۔ ہب کے حوالے سے جو ہے ہب ایک بہت بڑا اور بہت اچھا ماڈل ہے، اور اس طرح کے ماڈل جو ہے کیونکہ دیہاتی ایریا میں جیسے ہمارا امید نوکریاں کاروبار سینٹر ہے، اس ٹائپ کے اگر کلسٹر وائز دیہاتی ایریا میں بھی انوویشن ہب بنائے جائے جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، اور کیونکہ دیہاتی خواتین کو گھر سے باہر جانے کی زیادہ اجازت نہیں ہوتی، تو یہ سجیشن ہے کہ ہب اس طرح کے رورل ایریا میں بھی ہب بنائے جائے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے کہ جیسے یہ ہب ہے اور میں ایک عام سی لڑکی، اور مجھے یہاں پہ ایک میں چھوٹی عام سی لڑکی تھی گھر میں کام کرنے والی، اور آج یہاں میں ایک بزنس وومین ہوں، بزنس کر رہی ہوں، میرے ساتھ لڑکیاں ہیں کام کر رہی ہیں، تو اسی طرح کے ماڈل ہونے چاہیے، ہب ہونے چاہیے،
میری طرح اور بھی لڑکیوں کو موقع ملے وہ بھی آئیں. جیسے کہ اب نیو جدید طریقے کی ٹریننگ ہے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہی ہیں. تو مثال کے طور پہ جیسے میں انو کیفے چلا رہی ہوں تو میں نے وہ ہوٹل مینجمنٹ یا سیاست کی ٹریننگ ہونی چاہیے ہب میں ہی, تاکہ وہ میں یا دوسری لڑکیاں لیں اور نیکسٹ فیوچر میں ان کو فائدہ ہو. پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہب ہے وہ آفیشیلی گورنمنٹ کی ریکگنائزیشن ہو یا رجسٹرڈ ہو, تاکہ ہم کسی کو کہہ سکیں, موٹیویٹ کر سکیں کہ یہ رجسٹرڈ ہے. اور اس کے علاوہ جو آفیشیل جو ہے ڈپارٹمنٹس, دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے کوئی ہیلپ لے سکیں. یہ جو جیسے کہ کوئی ہیلپ جو ڈسٹرکٹ ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, اس کو بھی ہم اس میں انوالو کر سکیں سب سے پہلے. دوسری بات یہ کہ بہت سارے انوویٹرز ہیں, بہت سارے یوتھ ہیں ہمارے اس پروجیکٹ میں جو کہ ابھی تک کور نہیں ہو سکے, وہ ٹریول نہیں کر سکتے, بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا. تو ہر یو سی کے سطح پہ جیسے کہ پی پی ایچ آئی کے سینٹرز ہیں, ہر یو سی میں سینٹرز ہیں وہاں پہ جو ہے ہیلتھ کے, تو اسی طرح کے ہمارے پاس بھی ایک رورل ہب ہونا چاہیے, یا کہ ایسے بولیں کہ وہی سینٹرل بزنس کی کوئی پوائنٹ ہونی چاہیے تاکہ وہ وہاں پر آئیں, وہاں پہ ٹریننگس لیں اور سیکھیں. کچھ میں جیسے کہ اب میں ہوں, میں انو کیفے چلا رہی ہوں ہب میں دوسری کمپنیوں اور اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوں, وہ آئیں اور یہاں پہ اپنی ٹریننگ اور وہ کروائیں, اور میرے ساتھ جو جڑی لڑکیاں ہیں میری طرح ان کو بھی فائدہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی ہب کو یہ نیوز میں سپورٹ کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ ہب چلتا رہے اور لڑکیوں کو فائدہ بھی ملتا رہے, وہ بھی آئیں اور اپنی کام کرتی ہے, بزنس کرتی رہیں. فیوچر میں آپ کے ساتھ ہم ہم ایسوسیٹ رہیں گے, ان سے لنک اپ رہیں گے, وہاں سے جاب, وہاں پہ لوگوں کو آن لائن جاب پلیسمنٹ کرائیں گے, کیونکہ دیہاتی ایریا میں جو ہے انٹرنیٹ کا بڑا ایشو ہوتا ہے. وہاں پہ نئی معلومات ہم لوگ لیں گے, جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے معلومات لینے کے بعد اپنے جو یوتھ ہے ہماری دیہاتی ایریا کی, ان کو ہم وہ معلومات فراہم کریں گے. وہ جو ہب کے ساتھ لنک وہ بھی رہیں گے, اور ہب پہ جا کے وہ لوگ جو ہے آن لائن اپلائی کریں گے. جیسے کہ منظور آباد میں رورل ہب ہے, اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ انرپور میں بھی ہو, کھانوٹ میں بھی ہو, گوجڑی میں بھی ہو, جام شروع کے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر بھی ہو. اور وہاں کے جو انوویٹرز ہیں وہ میرے بیچ میٹس بھی ہیں, کچھ سینئر ہیں, کچھ جونیئر بھی ہیں میرے ساتھ. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ کام کروں. پہلے تو کوشش کریں گے کہ ہم کسی اور سے مدد لیں گے کہ بھئی یہ ہب کھل جائے, اگر نہیں بھی ملا تو ہم اپنے حساب سے کام کریں گے, اور انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے نا رورل ہبز قائم کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے رورل ہب نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا, EYW پروجیکٹ نے مجھے ایک راہ دکھائی کہ بھئی آپ اس راہ پہ چلیں تو یہ بہتر ہوگا, تو وہ یوتھ بھی ادھر آئے, وہ سیکھے, ان کی بھی وہ ڈائریکشن چینج ہو, وہ بھی صحیح جگہ پہ کام کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ رورل ہب کے ساتھ میں بھی کنیکٹڈ رہوں اسی طرح سے, اور دوسرے بھی رہیں تاکہ وہ فائدہ ہو سکے. Wow. So such an inspiring journey this has been, and I'm actually recalling, this recalled me the whole journey of 5 years. So, ladies and gentlemen, I'm presenting you with two very vibrant young businesswomen. They both share the name Zakia, but one is Zakia Bibi and the other one is Zakia Nazar, that you have seen in the video as well. And then I have two very vibrant, young men with me, one with the name of Fajid and the other one with the name of Javed Iqbal. They both are replicating the hub model in the village level and union council level. And they are providing income generation opportunities to the more rural youth while adapting, while more deepening this model of hub. So here they are with you. If you have any questions,
so you can ask them directly. You can write that into the chat box, and on behalf of you, I can translate those questions for you, and then they can directly answer. Yes. So, guys, do you have any question from any of us, or any appreciation note, maybe, just to inspire or just to boost the energy of our young people? So they all are there with us. Great. So there are some comments coming in. There is a comment from Iftikhar that Wajid is a great warrior. So Wajid, आपके लिए बहुत सारी तारीफें जो हैं वो आ रही हैं. इफ्तिखार खास तौर पे कह रहे हैं कि आप एक वॉरियर हैं और you are doing your work very well. Then there is a comment from Rifat, who's part of our partner organization as well. So she's saying that, like, if it's not counted as self-praising, but kudos to all of you. So she's all praise for all of our young people, जितने भी हमारे young लोग हैं, खास तौर पे जिन्होंने अपनी stories शेयर की, और बहुत से ऐसे हैं जिनकी stories, there are a lot of young people whose stories are not out there. We couldn't film them, but they have some aspiring journey to also inspire a lot of other people. So Nuzhat, आप वहाँ पे बता दीजिएगा लोगों को कि a lot of people are actually praising all the hard work that they have been through. Sama too लिख रही हैं amazing work from the youth, inspirational stories for the other youth. Saima has been is also part of Bedari, and she has been one of the strong arms for delivering this project on ground. So Saima, a lot of praise goes to you as well, and to the whole Bedari team. Then Raj Asnani, he's saying that EYW team always rock and hard worker. Thank you so much, Raj. Raj ने ये लिखा है कि EYW की टीम जो है वो हमेशा रॉक करती है, and they are वो बहुत मेहनती भी हैं. तो thank you so much, Raj. Thanks a lot. Bushra, who is our champion from EYW project, and who was actually founder of this project as well. So she's saying that, like, what an inspiration you all are, and what fond memories with Cafe we have. वाओ बुशरा. so बुशरा ये लिख रही हैं कि ये जो सारा कुछ है ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है हमारे लिए, क्योंकि बुशरा जाहिर है, जिस तरह मैंने बताया, कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही थी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी उन्होंने जस्ट रिसेंटली ही छोड़ा है. और वो ये भी लिख रही हैं कि मेरी कितनी अच्छी मेमोरीज़ हैं ज़किया के कैफ़े के साथ, तो वो सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं. Pere Shumela लिख रही हैं, बेस्ट ऑफ लक to all our young people for their future from Sindh and Punjab. So Pere जो हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हैं जाम शुरू के अंदर थोड़े अरसे के लिए, एंड शी सेइंग कि वो ये कह रही हैं कि वो जितने भी यूथ या लोग हैं उनकी फ्यूचर के लिए सिंध और पंजाब में दुआगो हैं. And then Nuzhat is also saying thank you. Saima Toor is also saying thank you. And there are lots of claps also coming in. मैं देख रही हूँ बहुत सारी तालियां भी बज रही हैं आप सबके लिए. So we have Lawrence here. Lawrence is our technical advisor for our income generation work, so our BB2. And he's saying that great video. How far have young women traveled to visit the hub? लॉरेंस ने हमसे कुछ सवाल किए हैं, तो मैं वन बाय वन उन सवालों को रिपीट कर देती हूँ. सो फर्स्ट इन इंग्लिश एंड देन इन उर्दू. So the question number 1 is that how far have young women traveled to visit the hub? How near do they have to be? And can you think of a model where hub people are visiting rural villages for outreach? So लॉरेंस का ये सवाल है कि ख़वातीन को बेसिकली कितना ट्रैवल अप्रॉक्सीमेटली करना पड़ता है हब तक आने के लिए, और कितना मतलब
Lawrence, I'm not clear about the second one. How near do they have to be? They have to come to the visit to the hub, and there are different locations where they are coming from. So there are villages and union councils that are nearby, but there are far-flung union councils and villages as well. So of course there can be an approximate distance that we can tell you, but I think there is not absolute one. एंड जो तीसरा सवाल है कैरन लॉरेंस का, वो ये है कि कैन यू थिंक ऑफ अ मॉडल वेयर बाय हब पीपल आर विजिटिंग रूरल विलेजेस फॉर आउटरीच. लॉरेंस दूसरे सवाल ये कर रहे हैं कि कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जहाँ से कि हब के लोग जो हैं वो जो है वो विजिट कर रहे हों विलेजेस को आउटरीच बढ़ाने के लिए. सो मैं बेसिकली नुज़रत आपको मैं सवाल दूंगी कि अगर आप पहले सवाल का जवाब दे दें कि ख़वातीन को कितनी दूर आना पड़ता है हब तक आने के लिए. हाउ फार यंग वुमेन हैव टू ट्रेवल टू विजिट हब. नुज़रत, आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर. शहर आई 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस से आती हैं ख़वातीन, जो क्योंकि सेंट्रल सिटी में है तो मोस्टली जो है उनको ट्रैवल करना पड़ता है 20 से 25 किलोमीटर तक हब तक. और हब से जो लोग जाते हैं उनके लिए हब से भी कुछ लोग जो है वो विलेजेस में भी जाते हैं, और चूंकि इनके यहाँ पे इनोवेटर्स इनके मिलते हैं तो यहाँ से ये फ्रीक्वेंट विजिट कर रहे होते हैं इनोवेटर्स में. Sorry, the hub is based at the central location, so they have to travel 20 to 25 kilometers in sometimes. And of course, as I mentioned, that like sometimes they come from the vicinity area as well, but the approximate distance that we can calculate is around 20 to 25 kilometers. And I wanted to ask the other question from Wajid, but it seems that he's got dropped. So Nuzhat, can you also ask maybe some of the young people over there, maybe from Javed, who has set up a rural innovation hub at Union Council level, कि कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जिसके थ्रू जो है वो हब के लोग खुद जाके लोगों को विजिट करें विलेजेस के अंदर आउटरीच बढ़ाने के लिए. मेरा ख्याल है जावेद लोग ऑलरेडी ऐसे ही करते हैं कि वो खुद जाके लोगों को विजिट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जावेद खुद बता दें तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा हो जाएगा. अस्सलामुअलैकुम मैडम, हम लोग ना सबसे पहले तो हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की थी, तो उसके बाद जो है जी 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 जावेद जी मैडम, हम लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन की हुई है, वो डाटा हमारे पास है. जिस काइंड की जॉब चाहिए होती है तो हम उसी डाटे को लेकर उस जगह पे जाते हैं और वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और ग्रुप डिस्कशन भी हो जाती है कि हमारे पास ये काम है, हम इस तरह काम करें, आप लोग हमारे साथ रजिस्टर हों और हमारे साथ चलें. ठीक है. और जावेद, आप ये काम नौकरी के लिए भी कर रहे होते हैं और कारोबार के हवाले से भी, दोनों हवालों से? जी, दोनों कर रहे होते हैं. नौकरी के हवाले से जो है नौकरी एक AHKRC के साथ हमारा MOU हुआ है, उनको हम लोग जो है जॉब प्लेसमेंट के लिए देते हैं, और बिजनेस के हवाले से जो जितने इदारे यहाँ पे काम करें उनके साथ लिंक अप रहते हैं कि कोई अगर बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हो तो हम लोग उनके साथ यूथ को एंगेज करते हैं. और दूसरा, हम लोगों ने एक ट्रेनिंग हासिल की हुई है बिजनेस के हवाले से, EDT इंटरप्राइज डेवलपमेंट ट्रेनिंग. तो हम लोगों को कारोबार में थोड़े थोड़े मशवरे भी देते हैं, जो हम लोगों ने पिछले जो 50 स्टार्टअप हैं वो करवाए हुए हैं. ओके, थैंक यू सो मच. और जावेद, आपका जो और आप जब ट्रेनिंग जो देनी होती है आपने यूथ को, आप यूथ को ट्रेन भी कर रहे हैं कि अभी ट्रेनिंग नहीं दे रहे? जी, बिजनेस के हवाले से ट्रेनिंग दे रहे हैं. बिजनेस के हवाले से जो लोग छोटा कारोबार कर रहे हैं उनकी बढ़ोतरी के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो वो आप गांव में जाके करते हैं या अपने सेंटर पे करते हैं? नहीं मैडम, जहाँ पे 10-12 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मेल फीमेल, तो वहाँ पे हम लोग सेटअप बना लेते हैं. हम में से तो एक ने जाना होता है और वहाँ से 10-15 लोगों ने ट्रैवल करना, तो इस वजह से हम खुद चले जाते हैं. Okay, thank you so much. Thank you. So Lawrence, Javed is, actually he has set up a rural hub at Union Council level. So the Union Council is smaller than district.
Our rural hub is at district level, and Javed's rural hub is operating at Union Council level. And what he's saying that, like, they usually they have visited all the nearby areas already, and they have listed down the people who want to do job and who want to do businesses. So whenever there any opportunity arises for jobs, so they reach out to people directly, and get them to the to explore that opportunity. And they, for the business trainings, they also go to the villages. So whenever they are there is a cluster of young people, 8 to 10, so then they go to the villages and then they train people over there, so that the people don't have to travel back to the district level hub to start their businesses. And this is something they were also proposing, that they need more rural or village level hubs to kind of get that the outreach going. वाजिद, आप वापस आ गए, मैं देख रही थी, आप थोड़ा सा इस पे बता सकते हैं? आपने भी एक रूरल हब जो है वो खोला हुआ है। लॉरेंस का ये सवाल था कि क्या हम कोई ऐसी मॉडल हो सकता है जहाँ पे कि हम खुद लोगों तक पहुंचे, यानी हब जो है वो खुद लोगों तक पहुंच रहा हो अपनी आउटरीच बढ़ाने के लिए, बजाय इसके कि लोगों को हब में आना पड़े? तो आप इसका जवाब दे सकते हैं? मैडम, उसके लिए हमने करना ये होगा कि सबसे पहले तो हमें वहाँ के लोकल जो यंगस्टर्स हैं, जो मेल हैं फीमेल हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे जो छोटे छोटे हब्स खोलने पड़ेंगे, जो रूरल हब्स के हिसाब से होने चाहिए। तो उस हिसाब से होगा ये कि हर यूनियन वाइज में एक हब होगा, तो बजाय कि लोग सिटी में आएँ, वो यंग वुमेन सिटी में आएँ, तो उससे बेहतर है कि वो विलेजेस में ही होंगी और हम डायरेक्टली जाके उनसे हब पे मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, thank you so much, Wajid. So Lawrence, Wajid is also saying that, like, if we have more rural hubs at Union Council level or at village level, so it will also solve the mobility issue of young women. So young women won't have to travel out of their villages to reach to those income generation opportunities, and they can also then easily visit those young people in the villages to take their services to them. So this is something that they are thinking, and this is part of their plan as well, as part of the expansion. So Saima has already responded some of one of the question from Lawrence, that the villagers also visit hub to see the interventions going at hub, and they are impressed from the work and motivate others to visit this unique model. So that's really, really encouraging. Ronald has some questions from us. So he's saying that really inspiring stories shared, and his question is that if young people can share the first moment or a key moment in their participation in the hub, when they felt more confident in charge of their own future. Thanks, Ronald, for such an inspiring question. So Ronald हमसे ये पूछना चाह रहे हैं, नुज़रत, अगर आप पहले वन बाय वन वहाँ पे ज़किया नज़र, ज़किया बीबी और जावेद से ये सवाल कर लीजिए कि रोनाल्ड हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम ये पूछें कि उनके लिए कौन सा वो मोमेंट, पहला मोमेंट था या की मोमेंट अगर हम कहें हब की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए, जब उनको लगा कि यार वो वाकई अब कॉन्फिडेंट हैं एंड अब वो अपने फ्यूचर को लेके चल सकते हैं, तो वो मोमेंट अगर वो हमसे कोई शेयर कर सके वो बहुत अच्छा होगा। अगर वो रिकॉल करें, अपने जहन में लेकर आएँ कि वो कौन सा लम्हा था जब उन्होंने ये महसूस किया कि रूरल हब में पार्टिसिपेशन ने उनकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर दिया है और अब वो अपने फ्यूचर को आगे लेके चल सकते हैं। हेलो ज़किया, हम आपको देख सक रहे हैं। जी हेलो, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है जी ज़किया। जी मैम, कोई ऐसा लम्हा जी मैं लगाओ कि आप जी मैं जो भी आपने इतनी सारी ट्रेनिंग ली है, और जब मैंने फार्मिंग की ट्रेनिंग ली थी तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए बहुत अहम है और मेरे फ्यूचर के लिए आगे बहुत अहमियत रखेगी, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव लगी। और इसी कोई वजह है ज़किया कि क्यों फार्मिंग की ट्रेनिंग से क्यों लगा? आपने पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की भी ट्रेनिंग ली थी, स्टैंडर्ड पैकेज की भी ली थी, फार्मिंग की ट्रेनिंग में ऐसा कौन सा लम्हा था जब आपको लगा कि ये अब हो जाएगा?
जी मैम, हम खुद एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, हमारा मतलब ज़मींदारा से ज़मीनें वगैरह खेती बाड़ी करते हैं। तो हमारे बाप दादा जैसे ही पिछले ज़मानों में बस खेती बाड़ी करते आ रहे थे। तो जब हमने इस ट्रेनिंग ली तो कंपोस्टिंग और छोटी लेवल पे और इसी हवाले से ट्रेनिंग दी गई, और इसके साथ ही फिर जब अचार और मुरब्बा और मतलब किचन गार्डनिंग की ट्रेनिंग दी गई। और जैसे कि ज़मीनें वगैरह ना होने की वजह से हम खेती बाड़ी करते हैं या कोई अपनी किचन गार्डनिंग कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अहम लगी कि हम थोड़ी सी ज़मीन पे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। Thank you, Zakia. Thank you so much. So, Ronald, Zakia जी Bibi, actually, she's running a cafe in one of our hub. She's also a farmer, and she has, also she also do her pickle business. She's also into kitchen gardening and tunnel farming as well. She said that when she took the farming training in our hub, so that was the moment for her. Then she feel really confident that now she can, do something with the skills that she is obtaining. And the reason she was telling is that, like, she has her forefathers are engaged in agriculture business, and she feel more confident because she somehow knows the in and out of that business, but she was not being able to specifically identify that what could be, the value addition that she can make into the existing agriculture work of her family. So she said that, like, when she took the farming training, she was, really really sure that now she can do something. And just to, tell you that before farming training, she also ran through the life skills training as well, that also give her, the boost and the kind of confidence that she was looking for. So thank you so much, Zakia. Zakia Nazar, आप बताइए. अस्सलाम वालेकुम मैम। जी आवाज़ से थोड़ा वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. कैसी कोई हैं बात नहीं, मैम जैसे आप? आप नजर भी आ रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं, आप बोलिए. कुछ बोले बने। अच्छा मैम, मैंने ट्रेनिंग के दौरान यानी गेम्स की जब ट्रेनिंग ली तो मुझे लगा कि बताइए। हाँ हाँ, बोले ये बोले बोले. बार का लेना चाहिए, उसमें यंग पैदा होगा, उसमें कॉन्फिडेंस भी आएगा, उसमें खुद भी पैदा होगी। तो एक दो से फेस टू फेस वैसे बात नहीं कर सकती थी मैं, लेकिन जब खुद से कारोबार किया तो फेस टू फेस बात भी कर सकती थी, और किसी को मशवरा लेना होता था या किसी से मशवरा मतलब लेना होता था। तो इस तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं यानी इस तरह से खुदकुशी कर लेनी चाहिए, तो मुझ में जीने की उम्मीद पैदा हो मतलब खत्म हो गई थी। तो ये जब खुद का यानी कारोबार किया तो मुझ में जीने की उम्मीद भी पैदा हो गई, खुद एतमादी आई, मुझ में हिम्मत पैदा हो गई। तो इसी वजह से मुझे लगा कि Thank you so much. Thank you, Zakia. Thank you. So, Ronald, for Zakia Nazar, actually, the Gals was the moment that actually, kind of helped her dream something, because she was, she's a person with disability, and she, was really, really disappointed from life, and she even wanted to commit suicide. That was really unfortunate, but that was the time when, EYW people somehow reached her, and she tried to explore, whether she can also participate in the EYW program, being a disabled person. And the people from EYW project actually encouraged her, and she said that, like, the GALS process, was really really empowering for her, that helped her, kind of envision her life and draw her future. And then she, also took, micro business training, the life skills training, and that helped her, kind of walk on the pathways that she designed for her self during the GALS, vision journey exercise. So this was, and she said that, like, I was not being even able to talk in front of my family at that time, but now, she's able enough that she can even negotiate, and she has a lot of importance now in the family. So the cut so the point short, is like is that. So Javed, do you also want to share very briefly and quickly? आपके लिए कौन सा मोमेंट था जावेद, जब आपको लगा कि अब तो बस हो गई, अब तो बस मैं दवाई लगा दूं? मैडम, जब हम लोगों ने ट्रेनिंग हासिल की थी ना गर्ल्स की, तो हमने उसमें ना एक अपना विजन जर्नी बनाया था, जिसमें हम लोगों ने एक सोचा था कि आज हम लोग यहाँ हैं तो साल बाद 6 माह बाद हमारा अपना इदारा हो और हम लोग खुद जो है उसमें उसके ओनर हो। तो मैडम, उस ट्रेनिंग से एक्शन प्लान जब बनाया था, तो ये अगर आपको करीब नजर आ रहा है तो ये देखिए, ये हम लोगों ने अपना विजन जर्नी बनाया था ना। जी 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 जी, सोच से कमाल था। वाओ,
सोच से कमाल। वाह जी जी। तो आज देखिए मैडम, मैं आज ये कहता हूँ कि आज हमारा अपना इदारा है, वो जो सोच थी आज कमाल तक पहुँच गई है ना। Zabardast. Thank you so much. Ronald Javed is saying that like GALS was also a turning point for him, and he drew his dream, and that he will open up his own institute where he'll be actually supporting rural people in getting in income generation. And he actually lived his dream. He drew that dream almost 2 years ago, and he named his dream as a journey from thinking to something amazing. And now he said that I have reached to that level where I'm doing wonder. So this was a turning point for him as well. Wajid, just quickly, agar aap bhi share kar sakeं, I think it's a very very inspiring discussion, so I'm spending more time on that. जी मैडम, जब मैंने ट्रेनिंग ली थी बिज़नेस की और वो एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि मेरे तो बेसिकली फादर जो है वो फार्मिंग में काम मतलब फार्मर हैं, तो मेरा कभी दिल ही नहीं लगा कि फार्मिंग का कोई काम करूं। तो जब मैंने ट्रेनिंग ली बिज़नेस की और एम्प्लॉयमेंट की, तो तब जाके मतलब मुझे फील हुआ कि यस आई कैन डू इट। तो उसके बाद मैंने प्रपोज़ल लिखा और हब हमारे पास अब है, मैं अपना बिज़नेस भी कर रहा हूँ और हब को भी चला रहा हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। Thank you so much. So I think same as Wajid has mentioned that like the life skills training and the business training was a turner for him as well. And as far as he started participating in these trainings, so he realized that he can do something for his community as well. So I think that helped him in opening up a rural hub in his own location. And now he's serving more young people like him. So guys, we are running a bit late in terms of question answer session. Bushra has another question. Another aspect of economic empowerment is social empowerment. To what extent you have seen that change happening at societal end, where people have started to accept the girls taking the economic space within their vicinity? So Bushra, we have some very remarkable results also to share from our midline studies and midline assessment as well, that I'll definitely share with you. But a quick example can be the discussion from Zakia Nazar, that when she was not earning at all, even her family members were not involving her into any important discussion or any important matter. And the way of and the kind of ignorance that she used to receive from her over or larger family as well, she was so disheartened that she was losing hope from life. But now she said that my family members, even her because her video clips, there are some more video clips as well, where she was saying that her relatives now try to call her for in her weddings and in her important family occasions, and if she don't go there, they ask for her participation. So I think this is already kind of empowerment that we can see, that a girl is being able to get recognized within their own family circles and within their own families and communities. So Bere कह रही हैं Zakia आपके लिए बहुत ज़्यादा power Zakia के लिए दे रही हैं, for both Zakias I think. And then we have few more questions. Lawrence कह रहा है कि एक और सवाल है Lawrence की तरफ से, what is the most important thing you want to achieve with the hub in the coming year, and what is the biggest obstacle you need to most important and ठीक है, obstacle you need to overcome I'm sorry you need to overcome in the coming year. So लॉरेंस का ये सवाल है हम लोगों से, और अगर कोई एक यंग बच्चा जो इसका जवाब दे दे कि इन कमिंग ईयर्स के अंदर आप जो हैं वो क्या देखते हैं कि रूरल हब जो है वो आपको किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, कि आप रूरल हब से क्या चाहते हैं आने वाले सालों के अंदर, और इसके अलावा आप सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं जो आपको अपने आने वाले सालों के अंदर उस चैलेंज को जो है वो उसको ओवरकम करना है. तो कोई एक अगर हमें जवाब दे दे इसका, कोई भी यूथ हमारा, तो आई थिंक विल बी एबल टू कैप्चर दैट क्वेश्चन. मैडम जो हमारा हब है ना, मैडम जो हब है ना हमारा, हम लोग ऑलरेडी जो इदारे यहाँ पे काम करें उनके साथ लिंक अप है. अभी हमारा कुछ दिन पहले ही एक यन के साथ जो है स्टेट बैंक का उनके पास प्रोजेक्ट है, उनके साथ मुआहदा हुआ है. वो पिछले 10 दिनों से वो काम जो है हम लोग ने स्टार्ट किया हुआ है. तो हमने क्योंकि हब में हम लोग को अपना रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन हमारी हुई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, और बाकायदा बैंक अकाउंट भी ओपन हुआ है.
तो हम लोग उनसे किसी इदारे से ये नहीं करते कि हमें ना आप पैसों की सूरत में कुछ दें, हम उसको ये कहते हैं कि हमें ना आप काम दें, हम काम करेंगे और काम के पैसे लेंगे। तो हम लोग इदारों के साथ लिंकअप है इंशाल्लाह। ये जो हमारे रूरल हब है ये खुद भी स्टैंडअप रहेंगे और लोगों को भी रोजगार जो है वो मुहैया करेंगे। जी, और जावेद कोई बड़ा चैलेंज आप देखते हैं कमिंग ईयर के अंदर जिसको आपको लगता है कि इसको फेस करना पड़ेगा? मैडम मुझे नहीं लगता कि इस तरह का अगर कोई चैलेंज हमें हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसियां हैं उस वजह से कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, कम्युनिटी में नहीं हो सकती इंशाल्लाह। ठीक है. Great. So, Lawrence, just to quickly answer your question, Javed is saying that, they need, linkages and connections with employers and other broader networks, so that they are able to actually convey and convert and link those rural young people with those job opportunities. So they actually need to get connected with Hub in future so that they can, get connected with other employers and can continue with the HR services that they are currently rendering. And in terms of obstacle, he's saying that, like, I don't foresee any obstacle from community side because people are really, really welcoming and they are really appreciating this initiative. The only obstacle he sees, may come from government policies, government restrictions, and government, that are usually unforeseen. But at the moment, he is not facing any particular issue in terms of, operating his business. So thank you so much, guys. We have some, I think, appreciation notes as well. हमारे कुछ और तारीफें हमारे नीचे आई हैं और बहुत सारे लोगों ने जो है वो हमें खासतौर पे गर्ल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा तारीफ की है. सो थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों के पार्टिसिपेशन का. हम आई थिंक वी आर ऑलरेडी ओवर टाइम इस सेशन के अंदर, बट वी ऑल्सो हैड प्रिपेयर्ड a quick presentation, or Nuzhat from Bidari was going to give this presentation. I'll hand over the floor to Nuzhat and to share the quick presentation with us. So Nuzhat, over to you. Thank you, Seher. Can you share presentation? Ji, just a minute. We're just sharing it. So you are sharing it, Babu? Yes, Nuzhat. No, this is not from Pakistan. This is from Bangladesh. Do you want me to share? Please, yes, please. So, Babu, I'm sharing, huh? So here you go, Nuzhat. Thank you, Seher. Hi everyone, Nuzhat Yasmin here from EYW Pakistan team, working as a project coordinator at Rural Innovation Hub Laya with Bedari. Dear EYW teams, honorable guest, Assalamu alaikum. I feel honored today to represent my country. It's my pleasure to welcome all participants. First of all, let me thank you for this opportunity, especially thanks to Seher. Now I would like to share that how could we turn our dream into reality. EYW journey was started with selection of districts. We selected 2 disaster-prone rural districts of Punjab and Sindh province to enhance social and economic empowerment of young girls and boys of Laya and Jamshoro. We adopted women-centered design approach to create hub services together with young people of Laya and Jamshoro and local stakeholders. HCD process consisted upon 4 stages: inspiration, ideation, validation, and implementation. In ideation process, together with young people, we developed their personas and understood their life's needs and challenges. Next. After that, in co-creation process, we brainstormed with youth and also holds
session with local experts for consultation. After a long process of HCD workshop, we crafted hub services packages for different intervention, income generation trainings, life skills, job readiness, microbiz and farming, and for startup academy, incubation program, rural urban startups, co-working space, and business development support, group training support, customized sport. Thanks to all, including Oxfam, all implementing partners and consultant, Youth Leia from Leia and Jam Shoro, 90 participants, government officials for their participation in brainstorming session, leading to creation of rural innovation hub packages. We developed and piloted customer journey of youth having different aptitudes were divided into three categories for job readiness according to parameter of decent work agenda, and for business and for climate smart agriculture. Here you can see micro business customer journey. This is one of three packages. After testing prototype on the honest feedback of user, we scaled up hub services around the established guideline of Rural Innovation Hub as a social enterprise. Hub established, here you can see some glimpses of Rural Innovation Hub, trainings, mentorship. Next. Hub offered services as a one-stop shop for youth, including TOT, technology development, mentoring, disaster mapping, hosting businesses, and as much more. No, next. Now I would like to share the service delivered by a Rural Innovation Hub over 5 years. 265 young innovators trained and delivered training on life skill, climate change, resilience, and confidence building to 5,000 young people. 1,468 young people obtained jobs after getting trained on job readiness and online job portals. 265 model businesses established. Why Hub? Hub supported young people to do business in male-dominated market. 1172 young farmers started agribusiness after obtaining farming skills and kickstart packages. 265 Hub assisted 180 female-led male-led startups. 66 female-led and 34 male-led SME gained business development support and created 400 new jobs. Hub convened advisory board, employer network, and business clinic. Young people assisted to obtain loan from banks and market. Hub facilitated linkages of young people with buyers, manufacturers, and employer through trades and job fairs. Hub facilitated youth-led campaigns on climate change. 500 tree planted and 2 biodiversity park were established. Hub addressed harmful social norms through interactive theatre by resolving young people mobility and inclusion issue. COVID-19 response. In COVID-19 response, sensitization and hygiene kit provisions, creation of youth advisory board, Hub also hosting youth business cafeteria, soap making, vegetable, fruits, and herbal products, drying, and other shops. Here you can see our youth family tree. In last 5 year, we reached total 45,166 youth. Now I am feeling excited to share that after empowering a large number of youth at last 5 years, now we are in the phase of hub sustainability.
We adopted procedure and Hub was registered as a private limited company. Board of director has been selected with 50% youth and female representation. Believe me, it was not a very easy task to accomplish. I am glad to share that I am also member of board of director. Here you can see the three major business plans for Hub sustainability. E-commerce digital platform for online marketing of local product or services, and Sankit Sikho Pakistan online job portals, offering freelancing courses national-wide, launching social media agency at Hub to create employer network opportunities and Hub trainings program, training certification on life skill entrepreneur development, and some other small business local business like membership, soap making unit, vegetable drying, and income from grape farms and computer classes, etc. This is not the end of ideas. We may include other businesses for to ensure hub sustainability. Next. Here, I want to share some challenges we are facing during 5 year hub sustainability, selection of appropriate model, sustainable, meaningful participation and ownership of local youth and community stakeholder, young women mobility and access to hub, selling model to government, private or academia, shrinking civic spaces, partner turnover, cause to demotivation in youth, finding partners with multiple technical expertise, outbreak of COVID-19 disrupted project activities. Now I want to share some lesson learned over 5 years of EYW project implementation. Important to include youth as a leader of hub, local community engagement, involvement, and respecting their volunteer contribution towards the hub sustainability. Measures should start at inception. Co-create process helped in creating local ownership by youth and stakeholder. Youth leadership model, while life skill awakened youth people's social acumen. Demand for female education increased by demonstrating success of educated and skilled young women at rural areas. Continuity of partnership is crucial for this nature of project. Next. Local youth leader delivering trainings in their village inspired their youth for joining, for changing process. Mandatory selection of female youth leader groups. Member encouraged female to participate and sustain a strong mentoring support in critical for end-to-end result. Use of technology, digital space gave for reaching result. Market-led digital scale not offered by government or other services provider should be added in hub services. Building synergies with government initiatives was more efficient and impactful and achieving result. Next. Thank you all for your attention and patience. Over to Ms. Seher. Gee, thank you so much, Nusrat. Thanks a lot. I think that was a very comprehensive presentation. And you ran us through the whole journey, when we started with the conception of Hub and then now where we are right now. So if there are any questions from the participants, from the audiences, so we'll really appreciate to answer, but very few quick questions because we are already running short of time. So let me have a look at the chat box. So
Suzanne has written that I believe it will be shared on the EYW. Thank you. I'll keep my eye on the site. Ronald is sharing, I just heard that we are running late and need to wrap up to go back to the main session. Sorry to interrupt. I like the idea of hub sustainability. Well done, Nusrat, for the great job. So thank you, guys. Thank you so much, for listening us patiently. As said by a lot of other people, I'm just sharing, a quick a link to Oxfam in Pakistan. Are just me, just click on that slide. So can you see my screen? Nuzhat, आप मुझे बता सकते हैं? Is it visible? Yes, we can see you. जी सर सहर जी. नजर आ रही है। Okay, so guys, there is a link to our YouTube channel, Oxfam in Pakistan. So all the documentaries that we made even at the start of our project and throughout our journey in this project are uploaded there, and you will find some very inspiring stories on that particular link. So please, if you want more material, you can visit that YouTube channel. Then we have Facebook page as well in Pakistan that also regularly update our project material and our project documentaries and other case studies as well. And then you have my email address here if you need any particular document, because we are also trying to work on some of the learning documents around our hub so that it can inspire other as well and can support other as well to replicate that model. So you can reach out to me directly as well if you need any specific document or any specific thing. So thank you so much for that, for your attention. Now we all will go back to the main session. So thanks again. Bye. Have a good day. And loads of applause for our young people.